चलो आज फिर से बातचीत हो जाए बहुत दिनों बाद। आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अपलोडिंग कंसिस्टेंटली बट आई डोंट गेट आइडियाज दैट ऑफन बट आज वाला आइडिया अच्छा है। ठीक है, सो बेयर विथ मी। टुडेज आइडिया इज अबाउट दिस थिंग कॉल्ड लुक्स मैक्सिंग। पता नहीं कैसी बीमारी है, पता नहीं लोगों को क्या सर पे चढ़ा हुआ है कि ऐसे मतलब स्किन पे कुछ भी रगड़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, पता नहीं क्या होता है उससे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। Looks maxing was started as a form of hygiene and basic cleanliness. Like you cut your hair, you style it, you dress properly, you dress nicely, you keep your I don't know, cut your nails. Like that is the basic. Like how much I understand, that is what looks maxing is. What they have started doing is they have started, micro analyzing every single thing about themselves. They have started analyzing like भाई देखना इधर इधर क्या है, देखना इधर पिंपल है क्या, ये देखना इधर 4 पिंपल है क्या. Like they've started doing this, and at this point it's more of an obsession than trying to rather look good. क्योंकि जब कोई अपने लुक्स पे इतना ज्यादा फोकस हो जाता है कि उसके लुक्स के सिवाय उसके आसपास उसे और कुछ दिखता ही नहीं है, then that person really has some other issues besides just his looks. मैं फिर से कहता हूँ, if someone's entire world perspective lies around the fact of how they look, then they have deeper problems than that. वो लोग अगर अपने looks ठीक भी कर लेंगे, if these people wake up the next morning with like a model face or something, they'll still have many other problems in their life. I am very sure of that, at least from my experience. क्योंकि देखो, first you see these two types of people. एक होते हैं जो अच्छे दिखते हैं, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी है. एक होते हैं जो लोग बुरे दिखते हैं, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी है. You will love being around both of these people. that look factor that look factor will matter only for a short amount of time. If you see someone who looks good or looks bad, looks are very subjective. Okay, अभी कोई comments में ऐसे चिल्लाना मत शुरू कर देना. Looks are very subjective. If you see someone who looks good, who looks bad, but both of them have a very charming personality, both of them have a very magnetic personality, then that look factor will not matter after a very short amount of time. But now if you see someone who looks good but has a very bad personality, and someone, this is looks good bad personality, this is looks bad but good personality, you'll automatically want to be around this person. तुम इसको देख के क्या सोचोगे? तुम्हें 2 दिन के लिए लगेगा कि भाई ठीक है, अच्छा दिखता है, ठीक है, अच्छा दिखता है, अच्छा दिखती है, जो भी है ठीक है, बट आई डोंट वांट टू बी अराउंड दैट पर्सन. तुम ऑटोमेटिकली यही सोच लोगे. लुक्स आर वेरी टेम्पोररी. व्हाट डू यू थिंक 30 के बाद क्या होता है? 30 के बाद क्या होता है? 40, चलो 40, 50, 60, कितने दिन ऐसे लुक्स पे जाते रहोगे? लुक्स मैक्सिंग इज अ कर्स टू पीपल हु आर ट्राइंग टू मॉडिफाई देयर जॉ लाइन, लाइक ऐसे करके घिसते रह रहे पूरा दिन, ऐसे ऐसे घिस रहे. I have seen all that, bro. They have these little iron का things, okay? I don't know what they call them. And वो लोग ऐसे ऐसे घिसते हैं, ऐसे ऐसे घिसते हैं. और and there's this other thing called derma roller. किसी को बियर्ड नहीं आती तो ऐसे बियर्ड पे घिसने लगता है डर्मा रोलर. ये वो ऐसे इधर से सीरम डाल रहा है, इधर से वो डाल रहा है. क्यों? Why? What is the point? Will having a beard automatically make you a more likable person? Maybe for a very short amount of time, maybe. But as soon as they find out your personality, that beard is meaningless. It's invaluable now. Invaluable is the wrong word. That does not have any value now. Okay. So my point is that if you are someone who is like way too obsessed with their looks, my personal advice to you would be this. As far as I know, as far as I have experienced, looks do help. Okay, looks do help in certain situations, but it's a very short-lived advantage. If you cannot build on that advantage, then it's useless. Even if you look very good and you cannot build on that advantage. Let's take an example. Okay, like इसमें मैं क्या example लूँगा? Simple सा example लेते हैं, ठीक है? Let's assume that there's this person who looks very good. Someone sees this person
एंड दे आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. उनको ये आदमी पसंद आया है, ये आदमी, ये लड़की पसंद आया है, ठीक है. दे गो अप टू दैट पर्सन एंड टॉक. The first thing this person says is something which offends the other person, or something which is very out of pocket, something which screams that भाई इसका कोई personality है ही नहीं, ये बस अपने looks पे ही जिंदा है, ये बस अपनी whatever it is, ये बस उसी पे जिंदा है, ये बस अपने external appearances पे ही टिका हुआ है. What do you think? This other person will ever come to talk to this person again? In very rare cases they will. In very rare cases, but mostly they won't. like, भाई अजीब है, ऐसे बोल देंगे. मतलब भाई दिखता सही है लेकिन अजीब है, दिखती सही है लेकिन अजीब है. This is the reality, and the faster you realize it, that is better. And some people are like, मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ शायद, ठीक है. They are like so obsessed, bro. Nobody cares. ठीक है, इधर सुन, इधर. Nobody cares, ठीक है. तो किसको खोल. Nobody really cares. तो कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, nobody cares. What you should do instead is study. I am 18 years old, okay? I am in college. I am studying. So if you are 18 or younger, then take this as a word of advice from me. मेरे से जो लोग बड़े हैं उनको पता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है कुछ. Take this as a word of advice. Looks are very short-lived. Study, work hard, work on your goals. फिजिक बना ले अच्छी सी, बॉडी बना ले, हो गया ना. लुक्स गुड है, बैड है, बॉडी बना ले अच्छी सी, बस हो गया. दैट्स ऑल दैट मैटर्स यार. बिल्ड अ गुड पर्सनैलिटी फॉर योर सेल्फ. ऐसे ऐसे हर समय ना लुक्स पे अगर तुम ऐसे टंगे हुए रहोगे तो इट्स वेरी यूजलेस. That's all I had to say for this video. Thank you so much for watching. I'll try to upload more consistently, but as I said, I don't get ideas that easily. So yeah, thank you for watching. Bye bye.